Most of the time in my class, I used to tell my students, on one side you should be there, very good in education, but on the other side you have to go and Very good at supports too, so that you can balance the two things. You are being right now the lecturer of the physics, Yes. so that deals with the natural and the natural phenomena. Yes. So tell us something more important from the physics point of view. Yes. Actually, I am working on this weather modeling. Mr. Sonal Lotz and me are actually working in the same lab. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वानी। व्यूवर्स के साथ हम ये बात शेयर करना चाहेंगे। अभी हम मौजूद है नॉर्थ कश्मीर के स्पोर्ट्स फील्ड पटन में। ये विक्ट्री फुटबॉल क्लब प्रेजेंट्स पटन सुपर लीग PSL, sponsored by so many sponsors like we have Barkat Marbles, New Barkat Marbles, Wani Medical Store, Makbul Memorial Hospital Palhalan, Hope Classes, Arabian Pizza and Burger, New Car Point, Iqbal Traders, Real Printing, and so many and so far. Dear viewers, you can clearly see in the visuals that night football tournament is going on here at Pattan in the sports field. As you might be knowing that football is a game that's being played by the millions of the people worldwide. People love to play this game, and such a great enthusiasm is being found. The players of the Pattan, such a great talent is being found within the players of the Pattan. So finally the two teams are in the final. Let me tell you that Pattan Pirates versus Friends Football Club, and the final match of this tournament is going on. You can exclusive see in the visuals how people are enjoying. The spectators are enjoying. Little children are enjoying here as well too. You can see how beautifully the children are enjoying the game here. And finally, FCC became the winners here, and the presentation ceremony is going on. Mr. Gulzar Ahmad Gojri is chief guest on the occasion. तो यहाँ पर इन प्लेयर्स की डेडिकेसी की वजह से, इन प्लेयर्स की हार्डवर्क की वजह से, इन प्लेयर्स की टैलेंट की वजह से यहाँ पर इस टीम ने जीत हासिल की है। मज़ीद हमारे साथ कुछ प्लेयर्स हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम शमीम अहमद है जनाब। शमीम, आप हमें बताएं कैसा अच्छा आपको फील हो रहा है, आपने इस नाइट टूर्नामेंट में यहाँ आज जीत हासिल की। सबसे पहले शुक्र अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इस मकाम तक पहुँचाया और यहाँ पे हमने फाइनल भी जीत लिया। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं अपने मैनेजमेंट का, जो मेरी टीम का पर्सनल मैनेजमेंट है, और विक्ट्री FC का जिनने यहाँ पे टूर्नामेंट निकाला था। और एक मैं आपकी वसादत से एक और बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले ये बात है, जब भी शाम को टूर्नामेंट यहाँ पे स्टार्ट होता था, इन केस ये नहीं हम कह सकते किसके दिल में क्या है, जो भी चाहे ड्रग में इन्वॉल्वमेंट था, कोई किसी और चीज़ में इन्वॉल्वमेंट था, उनकी इन्वॉल्वमेंट इससे ख़त्म हो गई। अगर 1 घंटे के लिए यहाँ पे मैच होता है, 2 घंटे के लिए मैच होता है, वो 2 घंटे के लिए वो फ्री है। वो वहाँ से सभी, इवन कि अगर किसी ने क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेला है, वो सभी भी यहाँ पे आते थे मैच देखने के लिए। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कई सारे प्लेयर्स कई सारे गेम्स खेलते हैं, कुछ क्रिकेट को खेलना पसंद करते हैं, वॉलीबॉल को खेलना पसंद करते हैं। फुटबॉल की आप कोई ख़ास बात बताएं, आप फुटबॉल को क्यों पसंद करते हैं? फुटबॉल को हम इसलिए पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू मी, मैं अपने तरफ से ये कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर क्रिकेट का मैच हो, मैं ये नहीं बोलता गेम हर कोई अच्छी है, अगर हम क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं उसमें पूरा दिन लगाना पड़ता है, मगर पूरे दिन के लिए, और उसमें फाइनेंशियली पैसे भी बहुत सारे देने पड़ते हैं। फुटबॉल एक ऐसा गेम है, चाहे इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, कोई मज़दूर हो, या कोई इवन कोई बिजनेसमैन हो, जो कोई भी हो, 2000 रुपये का सामान लाया, अपने लिए गए, शाम को 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, सभी फ्री होते हैं, सभी मैच खेलते हैं। मगर मुझे लगता है अगर कोई 10 क्रिकेट मैच खेलेगा, 1 फुटबॉल मैच खेलेगा, बराबर फिटनेस उसके बराबर है। सबसे बेस्ट गेम, और उसमें ज़्यादा टाइम जाता नहीं है, 1 या 1.5 घंटे के लिए मैच होता है, उसके बाद सभी फ्री होते हैं। Always giving a best coverage to our sports. Now the next award goes to the media personalities. The first one is Mr. Sahil Nazir Wani. Cheers, Shabash. Rai Nisa Ahmad Bhatt came here. The next award is Mr. Naeem Ahmad Bhatt. Thank you, Gulzar Sahab. Zoor Ahmad Sheikh. व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। हालांकि जब कोई भी अच्छा काम कंक्लूजन तक पहुंचता है तो उसका बुनियादी बैकग्राउंड ये भी होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, प्रॉपर मैनेजमेंट। हमारे साथ एक स्कॉलर है जावेद परा, जो इस पूरे चीज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं। इनसे हम 2 मिनट बात करेंगे। ओवरऑल ये फुटबॉल जो
टूर्नामेंट नाइट की इसकी सीरीज चली, कैसा रहा? जाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम एक्चुअली क्या किया हमने, मैंने आपको मतलब जब हमारा इनाग्रेशन मैच था तब भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम इस टूर्नामेंट को एक थीम के तहत चला रहे हैं। द थीम ऑफ दिस टूर्नामेंट इज अवॉइड स्क्रीन्स एंड कनेक्ट विद द नेचर। In this present era, most of our youths are actually connected with the screens. And the screen time is considered from 8 to around 1 a.m. Most of the youths, they get involved with these screens. What we did, we organized a night football tournament. So, Jai Saab, sorry for interruption. Let me know from your end. You mean to say that in order to avoid the screens, like we have the mobile phones in our homes, in our youth, so in order to avoid that very thing, you have created such a great initiative in order to initiate night tournament. Do you mean say like that? And Jai Saab, let me tell you that while you are being as a lecturer, क्या आप बच्चों को ये मैसेज देते हो, ये तालीम देते हैं कि फुटबॉल के रिलेटेड? हाँ, whenever I used to go in my class, I straightforwardly tell my students that you should go and play outdoor, be it a football, be it a cricket. Why? Because I have found from the past 4-5 years that the creativity has completely gone in our students. Why? Because they get connected with these screens who have created a fuss in their mind. Why? They are not taking the fresh air, and with that completely the thinking, the creativity and all those things have gone in our students. Most of the time in my class I used to tell my students, on one side you should be very good in education, but on the other side you have to go and Very good at supports too, so that you can balance the two things. You are being right now the lecturer of the physics, so that deals with the natural and the natural phenomena. So tell us something more important from the physics point of view. Actually, I am working on this weather modeling. Mr. Sonal Lotz and me are actually working in the same lab. What we are presently doing, we are doing on the climate change over the Western Himalaya region. How the climate, you know that in the present era, this global warming has badly impacted our region. So we are actually working on this climate data, how the climate has changed from the past 30 years. You can see when we have summers, they become very hot. When we have winters, they become very cold. It is all because of what's called a climate change. And my aim is I will completely go through this field and I will explore it in a very better way. So what do you feel at that moment while working with the director, meteorological department, Sonam Lotus? The name is very much famous, and how his working style during the lab hours? Actually, he is a very nice inspiration for me. He used to guide me in a very proper way, that you should spend time with your research work, then and only then you can go ahead. And he is posting me that you should come in the meteorological department because you have a good hold on this atmosphere dynamics. You can explain so many things. He is encouraging me that you go ahead, do a lot of research in your field. You can join our lab. It will boost us as well. Which degree you have recently completed? I have completed my PhD in weather modeling. I have almost done whole of my research work in a very great laboratory that's called as National Atmospheric Research Laboratory. That is one of the prestigious institute of ISRO, Indian Space Research Organization. I have one guide there. The name of the guide is Dr. Amit Kesarkar. He is one of the renowned scientists of ISRO. He used to post me that you should go very ahead in your life. You should be a great scientist, and someday you should be able to join the Indian Space Research Organization. Thank you very much. He was one of the scholars with us, namely Javed Par.